Hello students, welcome to Action online classes of chemistry. Today is the class of class 9 and the today topic is evaporation. Students, what is evaporation? Firstly, I will explain about what is evaporation. Evaporation is that type of process where liquid matter get converted into vapor state as well as you said that converted into gaseous state. But condition is necessary, that is 1 atmospheric pressure. So that type of phenomena, you can say that type of phenomena is also known as process. Phenomena where liquid converted into gaseous state at any temperature. But condition is necessary any temperature below its boiling point. टेम्परेचर इतना हो कि जिससे लिक्विड मैटर आपका डायरेक्टली बॉयल नहीं हो पाए, बॉइलिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर हो और वो टेम्परेचर आपका कोई भी हो सकता है. सो एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट is known as evaporation. So student, what is evaporation? Evaporation is that type of process, that type of phenomena where liquid substance, liquid matter gets converted into gaseous state, vapor state at any temperature below its boiling point is known as evaporation. जब किसी भी मैटर के अंदर का लिक्विड सब्सटेंस गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, बट वो टेम्परेचर आपका बिलो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए. दिस होल प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन. फॉर एग्जाम्पल आई गेस जब आप बाहर निकलते हैं और ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आपकी बॉडी से भी वाटर इवेपोरेट हो जाता है. ठीक है, आपकी बॉडी से भी वाटर इवेपोरेट हो जाता है. सो वेपर कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट और प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन प्रोसेस. सो देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन, व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन. आपके कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं व्हिच फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन, जो इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं. So, which factors are known as factor affecting? So, students, which factor who's affect the rate of evaporation? So, there are first factor is temperature. First one factor is temperature. How does temperature affect the rate of evaporation? So students, temperature is most important factor which affect the rate of evaporation. How? If we increase the temperature, easily liquid substance converted into gaseous system. For example, like as अगर आप नहाने गए हो ड्यूरिंग द विंटर सीजन, आप पानी को बॉयल करते हो, आपने टेम्परेचर नीचे से गैस ऑन किया, बर्नर ऑन किया, वाटर आपका बॉयल होना स्टार्ट करता है. आफ्टर सम टाइम्स आप टीवी देखने लगे, व्हाटएवर, किसी का कॉल आ गया, आपने फोन पिक कर लिया, आपको लेट हो गया, तो आप देखते क्या हो कि आपका वाटर जो होता है लिक्विड क्वांटिटी में होता है गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट. किसमें कन्वर्ट हो जाता है? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. सो प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन. बट आपका ये प्रोसेस किसमें होना चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट से बिलो होना चाहिए. बट हियर वी आर स्टडी अबाउट द रेट ऑफ इवेपोरेशन. सो temperature is that type of factor. If I want to increase the temperature, definitely you say that the rate of evaporation is also increases. So you can say that if
get increases, then rate of evaporation is also increases. So second factor is surface area. So what is surface area? Surface area is a coverage area where matter is scattered. आपका सरफेस एरिया एक ऐसा एरिया होता है जहां पे आप मैटर को क्या कर सकते हो, स्प्रेड आउट कर सकते हो या अदरवाइज स्कैटर कर सकते हो, व्हाटएवर फैला सकते हो. ठीक, फॉर एग्जांपल that is the surface of matter substance. For example, liquid, that is a liquid. Displayed in this bowl, and second one apparatus is this liquid also present. So surface area is second one factor which also affect the rate of evaporation. How? For example, when we start the heating, the surface area of high position. So if surface area is increases, then rate of evaporation also increases. यहाँ पे आपका evaporation जल्दी होगा as compared to second, that is A, and that is second one is B. So according to compare B, A पे आपका rate of evaporation increase होगा. Why? Because surface area is high. Here diagram number B, surface area is less. So if surface area is increased, so it has high surface area. Low rate of evaporation increases. If surface area is increases, rate of evaporation also increases. So surface area increases, evaporation also increases. If decreases, it also decreases. And next one factor is humidity of air. Next one factor is humidity of air. Humidity of air, it means that type of air where moisture is present. आपकी ऐसी एयर जिसमें moisture present होता है, you can say that is the humidity. So humidity of air also decreases the rate of evaporation. Why? Because अगर atmosphere में आपकी ठंडक है तो evaporation कभी भी नहीं होगा. Liquid substance आपका कभी भी gaseous substance में convert नहीं होगा. So you are said that if humidity of air is decreases, then rate of evaporation is increases. If humidity of air is increases, so it's a reverse, that is decreases. That is third one factor. And fourth one factor is wind speed. So students, fourth one factor is wind speed. Students, like as कभी-कभी आपकी air जो होती है वो बहुत तेज flow में चलती है. You can say that is the गर्म हवा है. आपकी जो hot air चलती है pass out होती है, that is also, that is wind speed, which is fourth one factor. So speed of wind is increases,
then rate of evaporation also increases. If wind of speed of wind is decreases, and then rate of evaporation is also increases. So these all are the factor impacting rate of evaporation. Students, that is the most important topic for the examination. Thank you. Have a nice day. Hello student, have a pleasant morning to one and all. This class is for 9th and subject English language, and the topic of today is conversations, conversion of sentences, not conversation, conversion of sentences. Student, before starting this topic, there is a message for you that I taught you the poem Faithful Friends composed by William Shakespeare. That was in your previous syllabus, but in today's syllabus, updated syllabus, that poem is replaced. That poem is replaced in the 7 Ages of Man. So, student, you have not to study that poem. I taught you that poem because that was in your previous syllabus. So today I gone through the syllabus, and that poem is replaced. That is also written by William Shakespeare, The 7 Ages of Man. Before Faithful Friends, the topic reordering was going on, and in that topic there was 2 sentences, and you have to do the correction of those sentences because in written PDF form I have given you, there was a silly mistakes, so you have to get it corrected. Student, there were 2 sentences in PDF number date 14 and 15. The more gets a man, wants more the he. The more gets a man, the more wants he. So you have to do the correction. The more a man gets, the more a man gets, comma, the more he wants. Means इंसान को जितना ज़्यादा मिलता है उतना ज़्यादा वो और चाहता है. इंसान को जितना ज़्यादा मिलता है उतना ज़्यादा वो और चाहता है. And the sentence will be framed like the more you practice, the more you perfect. जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा perfect होंगे. In the same way you have to frame the sentence because we put the comparatively, then after the subject, then after the verb. So you do the correction in that sentence. And Rana Pratap loved his country very much. Rana Pratap loved his country very much. It means subject, your verb, your object, then after your adverb. So student, you have to do the correction in these 2 sentences. Fine. So you have not to study Faithful Friends that I taught you, that poems replaced the 7 Ages of Man. So I will continue the literature part in coming days. But from today we will start the language portion, and in language portion you have to study conversion of sentences. Conversion of sentence मतलब sentence का आपस में बदलना, वाक्यों का आपस में बदलना. So student, before starting it, I just want to tell you what is sentence. Sentence क्या होता है? So I am writing over here definition of sentence. A sentence is a group of words that gives a meaningful Okay, so sentence is a group of words that gives a meaningful sense. Sentence वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो एक मीनिंगफुल सेंस देता है. अगर बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे रखे हुए हैं और अगर उसमें कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, दैट कैन नॉट बी कॉल्ड अ सेंटेंस. सो स्टूडेंट, if the sentence are putting in an order and it gives a good sense, so that is called a sentence. So now we will go types of the sentences. Types of the sentences. So sentences are 5 types.
sentences are 5 types. The first one is assertive. Assertive. That is classified into two: affirmative and negative. Right? The second one, interrogative. Interrogative is classified into two: simple interrogative and more interrogative. Okay. The third one is imperative. The fourth is objective, and the fifth, the last one, exclamation. So student, before starting the new topic, conversion of sentences, we will study sentence and the types of sentences. The definition of sentences, I have already told you. A sentence is a group of words that gives a meaningful sense. And words, what is words? Words is a group of letters. Fine. These are 5 in number. 5 होते हैं. The first one is your assertive. It is classified into two: affirmative and negative. It means affirmative and negative sentence can be called assertive sentence. Let's see. Different types of the sentences are there. Assertive sentence means a simple sentence. The sentence started with your main verb. The sentence started with your subject. Then after your helping verb, your main verb, your object, and at the end of the sentence we put full stop. It means a simple sentence started with your subject and ended with a full stop. यानी subject से शुरू होता है और उसमें लास्ट में हम लोग full stop लगाते हैं. It gives a positive sense. According to the tense, we put the main verb. According to the sentence, we put helping verb. Fine. Now I am going to tell you the examples of the sentence. Just like many more examples are there. Just like we take the example of present indefinite or present continuous. I daily get up early in the morning. I daily get up early in the morning. So I is the subject. Daily is your adverb. I daily get up. Get up is your main verb. Early, in is your preposition. The is your article in the morning. This is the complement of the object. Either you can say it's the object in the morning. And at the end of the sentence we put full stop. So this is your affirmative sentence because there is a positive sense. I daily get up in the morning. If you have to change the sentence, I don't get up early in the morning. I don't get up early in the morning. This is the negative one. I don't get up early in the morning. This is the negative one. She sings very well. This is the affirmative. She does not sing very well. I am preparing for board examination. I am not preparing for the board examination. I am listening to you. You are not listening to me. I am doing hard work these days because I am doing hard work these days. This is the sentence. I am not doing hard work these days. Fine. I am writing a letter to my friend. I am writing a letter to my friend. I am not writing a letter to my friend. I am not writing a letter to my friend. So students, you are seeing that if the sentence is positive, we don't use no or not. If the sentence is negative, we have to use not. And what is the specific quality? The affirmative sentence will be started with the subject and ended with the full stop. Fine. Any types of the sentence can be your assertive sentence. Affirmative and negative, both the sentence can be in the category of the assertive sentence. Fine. Now the interrogative. What is the meaning of the interrogative? Interrogative, in these types of the sentence, we ask question to someone. These types of the sentence, we ask question to someone. हम किसी से प्रश्न पूछते हैं.
This one is also classified into two: simple interrogative and more interrogative. Simple interrogative and more interrogative. Students, simple interrogative sentences are started with your helping verbs. With your helping verbs, and more interrogative sentences are started with your question. This is the difference between two. Simple interrogative is started with your helping verb, and this will be started with your question. Helping verbs. Helping verbs is like auxiliaries verb, just like is, RM, was verb, and do, does, did. These are the words, fine. So if the sentences are started with them, अगर आपका वाक्य इनसे शुरू हो रहा है तो आपका वो सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, आपका वो सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा. बट इफ द सेंटेंसेस आर स्टार्टेड विद योर क्वेश्चन वर्ड, जस्ट लाइक when, what, where, who, so the sentence will be more interrogative sentence. So just see some examples of it. Am I not a good boy? Are you not preparing for examination? And are you not listening to me? Are you not doing hard work in these days? Are you not paying attention towards your studies? And the example of more interrogative: where do you live? Where do you live? Why are you not paying attention? Why are you not paying attention to your class? Why are you not helping to your mother? Why are you not giving good time towards your studies? So these are the examples of simple interrogative and more interrogative. Fine. Both the sentence you can call interrogative sentence. So student, today we discuss assertive one and interrogative one. This is a part of the conversion of the sentence. The remaining three, imperative, optative and exclamative. These sentences we will discuss in your next class. It's enough for you. So student, thank you and have a nice day to one you all. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9th में पेज नंबर 45 यूपी बोर्ड सब्जेक्ट हिंदी में पर्यायवाची शब्द आपको पढ़ाती हूँ. कल मैंने आपको तद्भव तत्सम पढ़ाए थे, आज मैं आपको पर्यायवाची शब्द पढ़ाती हूँ. ये आप अपनी क्लास वर्क की कॉपी में कंटिन्यू लिखते जाए. देखिए, इधर का जो पोर्शन है वो आप ब्लैक पेन से लिखेंगे और उसके सामने वाला कॉमा लगा करके वो आप ब्लू पेन से लिखेंगे. ठीक है. देखिए, चाहे तो आप नंबर डाल सकते हैं. पहला पर्यायवाची है अग्नि. अग्नि का आग, अनल, पावक, हुतासन. 4 से अधिक भी होते हैं, मैंने 4 ही लिखे हैं. अग्नि का आग, अनल, पावक, हुतासन. ठीक है. दूसरे में आइए अमृत. अमृत के पर्यायवाची अमीय, पीयूष, सुधा, सोम. असुर में आइए. असुर के पर्यायवाची धनुष, धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस. ऐसे सुने, असुर के पर्यायवाची धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस. फिर अश्व में आइए. अश्व माने होता है घोड़ा. अश्व के पर्यायवाची देखें, घोड़ा, है, घोटक, तुरंग. आम्र के देखिए, आम के आम, रसाल, सहकार, अति, सौरभ. इतने होते हैं. फिर से देखिए, आम के पर्यायवाची आम, रसाल, सहकार, अति, सौरभ. आकाश के पर्यायवाची देखिए, नभ, अंबर, गगन, अनंत. फिर से देखिए, आकाश के पर्यायवाची नभ, अंबर, गगन, अनंत. ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया. आगे देखिए, आँख का नेत्र, चक्षु, लोचन, दृढ़. नेत्र का फिर से सुनिए, नेत्र, चक्षु, लोचन, दृढ़. ठीक है. अब आनंद शब्द के पर्यायवाची देखिए, हर्ष, उल्लास, उत्साह, प्रमोद. हर्ष, उल्लास, उत्साह, प्रमोद. ठीक है.
अब ईश्वर शब्द के पर्यायवाची देखिए, परमात्मा, जगदीश, भगवान, प्रभु। आप ईश्वर के पर्यायवाची पहले से जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ। परमात्मा, जगदीश, भगवान, प्रभु। गाय के पर्यायवाची शब्द में आइए, धेनु, सुरभि, गौ। धेनु, सुरभि, गौ। कमल के पर्यायवाची में आइए, जलज, पंकज, सरोज, पुंडरीक। इसे देखिए, कमल की पर्यायवाची जलज, पंकज, सरोज, पुंडरीक। ठीक है। अब उद्यान के पर्यायवाची में आइए। उद्यान माने होता है बगीचा। बगीचा, उपवन, वाटिका, बाग। इसे देखिए, बगीचा, उपवन, वाटिका, बाग। एक बार मैं पुनः आपको फिर से पढ़ाती हूँ। आग का पर्यायवाची आग, अग्नि का पर्यायवाची आग, अनल, पावक, हुतासन। ठीक है। फिर अमृत का पर्यायवाची अमीय, पीयूष, सुधा, सोम। फिर असुर का पर्यायवाची धनुष, दानव, दैत्य, राक्षस। फिर अश्व, अश्व माने होता है घोड़ा। इसके पर्यायवाची देखिए, घोड़ा, है, घोटक, तुरंग। आम्र के पर्यायवाची आम, रसाल, सहकार, अति सौरभ। इसके बाद आकाश के पर्यायवाची देखिए, आकाश के नभ, अंबर, गगन, अनंत। आकाश के पर्यायवाची फिर से नभ, अंबर, गगन, अनंत। फिर आग के पर्यायवाची देखिए, नेत्र, चक्षु, लोचन, दृक। फिर आनंद के पर्यायवाची देखिए, हर्ष, उल्लास, उत्साह, प्रमोद। ईश्वर के परमात्मा, जगदीश, भगवान, प्रभु। गाय के धेनु, सुरभि, गौ। कमल के देखिए, कमल के पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जलज, पंकज, सरोज, पुंडरीक। जलज, पंकज, सरोज, पुंडरीक। फिर उद्यान के पर्यायवाची में आइए, बगीचा, उपवन, वाटिका, बाग। इसे देखिए, बगीचा, उपवन, वाटिका, बाग। हेलो स्टूडेंट्स, मैं पेज नंबर 45 पर्यायवाची कंटिन्यू चल रहे हैं, उनको देखें। किरण, किरण का पर्यायवाची है अंश, रश्मि, मयूख, कण। 4 हमने लिखे हैं, फिर से देखिए। किरण का पर्यायवाची अंशु, रश्मि, मयूख, कण। ठीक है। फिर किसान के पर्यायवाची में आओ, कृषक, हलधर, अन्नदाता, भूमिपुत्र। फिर कृष्ण के पर्यायवाची में आओ, घनश्याम, वासुदेव, मधुसूदन, मुरलीधर। कृष्ण के पर्यायवाची में आइए, घनश्याम, वासुदेव, मधुसूदन, मुरलीधर। फिर गंगा के पर्यायवाची में आइए, मंदाकिनी, भागीरथी, सुर सरिता, देवनदी। गंगा की पर्यायवाची देखिए, मंदाकिनी, भागीरथी, सुर सरिता, देवनदी। गणेश की पर्यायवाची में आओ, एकदंत, लंबोदर, गजवदन, मोदक प्रिय। इसे देखिए, गणेश का एकदंत, लंबोदर, गजवदन, मोदक प्रिय। फिर कोयल के पर्यायवाची में आइए, कोकिला, श्यामा, पिक। कोकिला, श्यामा, पिक। फिर चंद्रमा के पर्यायवाची में आओ, शशि, मयंक, सुधाकर, राकापति। शशि, मयंक, सुधाकर, राकापति। फिर जल के पर्यायवाची में आओ, पानी, नीर, तोय, जीवन। जल के पर्यायवाची में आओ, पानी, नीर, तोय,
जीवन। जगत के पर्यायवाची में आओ, संसार, दुनिया, जगती, जग। संसार, दुनिया, जगती, जग। इसके बाद देवता के पर्यायवाची में आओ, सुर, ग्रीवाण, अजर, अमर। सुर, ग्रीवाण, अजर, अमर। फिर झंडा के पर्यायवाची में आओ, ध्वजा, पताका, केतन, केतु। तलवार के पर्यायवाची में आओ, असी, कृपाण, करवाण। फिर से एक बार मैं आपको पढ़ाती हूँ। किरण शब्द के पर्यायवाची, अंशु, रश्मि, मयूर, कण। किसान में कृषक, हलधर, अन्नदाता, भूमिपुत्र। कृष्ण में घनश्याम, वासुदेव, मधुसूदन, मुरलीधर। गंगा में मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, देव नदी। गणेश में एकदंत, लंबोदर, गजवदन, मोदक प्रिय। कोयल में कोकिला, श्यामा, पिक। चंद्रमा में शशि, मयंक, सुधाकर, राकापति। जल में पानी, मीर, तोय, जीवन। जगत में संसार, दुनिया, जगती, जग। देवता में सुर, ग्रीवाण, अजर, अमर। झंडा में ध्वजा, पताका, केतन, केतु। तलवार में आसी, कृपाण, करवार। हेलो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 45 के बचे हुए पर्यायवाची देखिए। दिन का, दिवस, प्रमाण, वार, वासर। ठीक है, 4 यहाँ पे लिखे हुए हैं। दिन का फिर से देखिए, दिवस, प्रमाण, वार, वासर। पृथ्वी का, इला, भूमि, मेदिनी, वसुंधरा। नदी का, सरिता, तटनी, आपगा, तरंगणी। इसे सुने, नदी का, सरिता, तटनी, आपगा, तरंगणी। पक्षी का, खग, विहग, नभचर, द्विज। इसे देखिए, पक्षी का, खग, विहग, नभचर, द्विज। पुष्प का, फूल, कुसुम, सुमन, पुष्प। पुष्प का देखिए, फूल, कुसुम, सुमन, पुष्प। पुष्प माने भी पुष्प होता है। बिजली का देखिए, चपला, चंचला, सौदामिनी, विद्युत। चपला, चंचला, सौदामिनी, विद्युत। वृक्ष में आइए, तरु, बिटप, पादप, द्रुम। तरु, बिटप, पादप, द्रुम। एक बार फिर से देखिए पूरा। दिन का, दिवस, प्रमाण, वार, वासर। पृथ्वी का, इला, भूमि, मेदिनी, वसुंधरा। नदी का, सरिता, तटनी, आपगा, तरंगणी। पक्षी का, खग, विहग, नभचर, द्विज। पुष्प का, फूल, कुसुम, सुमन, पुष्प। बिजली का, चपला, चंचला, सौदामिनी, विद्युत। वृक्ष का, तरु, बिटप, पादप, द्रुम। Hello students, welcome to the online classes of HGOI. Myself Prachi Trivedi, your maths teacher. Students, in my previous video, I start the chapter which is rationalization, and we discuss about how to rationalize the binomial denominator. Now today we are going to solve some questions related to the chapter rationalization. Now the first question is, find the value of a and b if
we do firstly we multiply and divide by the conjugate of denominator. Now find what is the conjugate of denominator. Root 3 minus 1. Root 3 minus 1. Then the equation becomes multiply and divide by this, we get, okay. Students, here root 3 minus 1 become root 3 minus 1 whole of square. As we know that if base are same, then power will be added, okay. And in denominator, this is a plus b and this is a minus b. Then the equation becomes a square minus b square, okay. And here we use the identity a minus b whole of square, which is a square plus b square minus 2ab, okay. Now a square plus b square minus 2ab upon root 3 square is 3, 1. Okay, when we solve it, we get 3 plus 1 minus 2 root 3 upon 3 minus 1 is 2. Means 4 minus 2 root 3 upon 2. Okay, students? Now, we take the common 2. It becomes 2 root 3 upon 2 and 2 minus 2 root 3. Now, on equating the LHS and RHS, we get 2 minus 2 root 3. 2 minus 2 root 3 is equals to a plus b root 3. Okay, this is the value of LHS and this RHS side. Now, students, what we will do in this? Firstly, we equate the rational and irrational parts on both sides. Okay, on equating rational and irrational part on both sides. Okay. Now students, here the rational number is 2 and a is also a rational number. It means a is equals to 2. Okay. And minus root 3 is an irrational number and b root 3 is an irrational number. Then the value of b is minus 1. The value of b is minus 1. This is the answer of this question. Student, the next question is prove that 1 upon root 2 plus 1 plus 1 upon root 3 plus root 2 plus 1 upon 2 plus root 3 is equals to 1. Okay. Now students, in this question, what we will do? Firstly, we rationalize the denominator of all these terms. Okay. For this, we multiply by the conjugate of denominator. Let's see the solution. Conjugate of denominator is root 2 minus 1. Root 2 minus 1. Okay. Plus 1 upon root 3 plus root 2. Here the conjugate of denominator is root 3 minus root 2. Root 3 minus root 2. Okay. Now next term is 1 upon 2 plus root 3 and here the conjugate of denominator is 2 minus root 3 is equals to 1. Okay. Now students, multiply, when you multiply by 1, it gets
minus root 2 upon root 3 square minus root 2 square plus 2 minus root 3 upon 2 square minus root 3 square is equals to 1. Okay students? Now root 2 minus 1 upon root, this is 2 minus 1 plus root 3 minus root 2 and this is 3 minus 2 plus 2 minus root 3, this is 4 minus 0 is equals to 1. Children, as 2 minus 1 is 1, 3 minus 2 is 1, 4 minus 3 is 1. Okay? Then it becomes 2 minus 1 plus root 3 minus root 2 plus 2 minus root 3 is equals to 1. 2 minus 2 plus root 3 minus root 3 and minus 1 plus 2 is equals to 1. Minus 1 plus 2 is 1. Then okay. Children, the next question is, if x is equals to 3 plus 2 root 2, check whether x plus 1 upon x is rational or irrational. See this question carefully because we will solve many number of questions with the help of this question. Okay? Now let's see the solution. Here the value of x is 3 plus 2 root 2. Then what is the value of 1 upon x? 1 upon x is 1 upon 3 plus 2 root 2. Okay? Now what will we do? We rationalize the denominator of this term. For this, firstly we find the conjugate of denominator, which is 3 minus 2 root 2. Okay? Now multiply and divide by the conjugate of denominator, we get this. Okay? When we multiply 1 by 1, we get here, this is a minus b, this is a plus b and a minus b, means a square minus b square. Okay? Now 3 minus 2 root 2 upon 3 square is 9 and 2 root 2 square is 2 root 2 square means 2 into 2 into root 2 into root 2 means 2 2s are 4. Root 2 into root 2 is 2, 4 2s are 8. Then it is minus 8. Okay? Then students, 3 minus 2 root 2 upon 1, then the value of 1 upon x is 3 minus 2 root 2. Okay? Now, what is the value of x plus 1 upon x? X plus 1 upon x? X is 3 plus 2 root 2 plus 1 upon x is 3 minus 2 root 2. Okay? 3 plus 3 is 6. And as we know that 6 is the rational number. Then my question is rational or irrational? Then it is a rational number. Okay? Now students, if here is one question, we find the value of x plus 1 upon x whole of square. Then what will we do? We know the value of x plus 1 upon x, which is 6. Then we square it and the answer is 36. Okay? If the question is find the value of x plus 1 upon x cube, as we know that x plus 1 upon x is 6, then 6 cube is 260 and the answer is 260.
Hello students, welcome to you SUI online class 9 of physics. Students, today we will solve some numerical problems based on average speed and average velocity in chapter motion. Let's start. Students, our first question is Joseph jogs from one end A to another end B. This is the one end and this is one another end of a straight 300 meter. Distance between 2 points A and B is 300 meter and this distance covered in 2 minutes 30 seconds and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. Joseph turns around point C 100 meter back. In this duration, Joseph takes time 1 minute. Now, what are Joseph's average speed and velocities in jogging? First, from A to B and second, from A to C. So students, in this question, we have to find average speed of Joseph from point A to B and average velocity from A to B, and in second part we have to find average speed of Joseph from point A to C and average velocity from A to C. So students, firstly we take part A. From A to B, distance SAB is equal to 300 meter and time taken by Joseph is equal to TAB is equal to 2 minutes 30 seconds. Students, firstly we convert it into seconds. Students, as we know that 1 minute is equal to 60 seconds. Now, after solving, we get 120 seconds plus 30 seconds is equal to 150 seconds. So students, this is the total time taken by Joseph from point A to B. Now students, we have to find average speed of Joseph from point A to B. Students, we know that average speed is obtained by dividing total distance traveled by an object upon total time taken. So students, average speed is equal to total distance covered upon total time. Students, here total distance between A and B is equal to 300 meter and time taken during this distance is equal to 150 seconds. 0 to 0 cancel. 15 to the 30. Now students, we get 2 meter per second. Students, this is the average speed of Joseph from point A to B. And now we calculate average velocity. Students, average velocity is equal to net displacement upon total time taken. Students, as we know that displacement is equal to shortest distance between 2 points, final point and initial point is called displacement. Here
A is the initial point and B is the final point. So here difference between final position and initial position is equal to 300 meter. So students, this is the displacement between point A and B is equal to 300 meter upon total time taken during this is equal to 150 second. 0 to 0 cancel, 15 to the 30 is equal to 2 meter per second. Students, here average speed and average velocity between points A and B are same because total distance traveled between A to B is equal to 300 meter and displacement between B to A between A to B is equal to 300 meter. So students, this is our first part answers. Now students, second part from A to C. Students, A to C distance traveled by Joseph is equal to SAC is equal to SAB. Total distance is AB plus SBC. SAB is equal to 300 meter and SBC is equal to 100. Now total distance traveled from A to C is equal to 400 meter and total time taken during this distance is equal to Joseph takes 150 second from A to B and Joseph turns back to the point C in 1 minute. So 2 minute 30 second plus 1 minute. Students, firstly we convert it into second as we know that 1 minute is equal to 60 second. So here 2 6 are 12, 120 second plus 30 second plus 60 second. Now we get 200 0 0 0 6 3 9 2 11 210 second. So students, time taken during A to C is equal to 210 second and now we find displacement between point A and C is equal to, students, as we know that displacement is equal to the difference between distances from final position to initial position. Here initial position of Joseph is point A and final position is C because Joseph turns to the point C. So this is the final position of Joseph. So distance between A to C is equal to AB minus BC. AB minus BC is equal to 300 minus 100 is equal to 200 meter. Students, this is the displacement between point A and C. Now we have to find average speed between point A to C and average velocity between point A to C.
Now students, we know that average speed is equal to total distance upon total time. This is the initial point. Students, total distance between A to C is equal to 400 meter and total time taken during distance from A to C is equal to 210 seconds. 0 to 0 cancel. After solving this, we get 1.90 meter per second. Students, this is the average speed of Joseph from A to C. Now we have to calculate average velocity between point A to C. So students, displacement between point A to C is equal to 200 meter. So we know that average velocity is equal to net displacement upon total time taken during this distance. Net displacement is equal to 200 meter upon total time is equal to 210 seconds. 0 to 0 cancel. Students, after solving this, we get 0.95 meter per second. Students, this is the average velocity between point A and C. So, Joseph's average speed between point A to C is equal to 1.90 meter per second and average velocity between point A and C is equal to 0.95 meter per second. Thank you, students. A very good morning, students. In my previous lecture, I have explained you economics second chapter, people as a resource. And now today, I am going to teach geography second chapter, physical features of India. So before starting the chapter, I am giving you some revision of my previous lecture. So as you know, the economics second chapter, people as a resource. People as a resource means people as a resource is way of referring to countries, working people with their existing term of productive skills and abilities. So, the people as a resource is a main important feature of the country. So, people in our country there are three sectors: primary sector, secondary sector, and tertiary sector. In primary sector, these which activities are included? These activities are related to the natural resources like fishery, agriculture, forestry, mining, animal husbandry. तो ये सब activities हमारी किसमें आती है बच्चों? Primary sector में. Now secondary sector, quarrying and manufacturing are included in the secondary sector. And third, tertiary sector, trade, communication, banking, education, ये सब हमारी activities इसमें आती हैं, are included in tertiary sector. These activities provided goods and services for both two sectors. So, economic activities. The activities add to value in our national income are called economic activities. They are also of two types: market activities and non-market activities. So student, what are market activities? Market activities are those activities which purpose is to gain profit.
And on the other hand, non-market activities are those activities which are production of self-consumption. तो इसमें क्या होता है, इसमें इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, इसका उद्देश्य क्या होता है, अपने स्वयं को का कंजम्पशन करना। अब हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, what is the situation of unemployment? Unemployment is said to exist when people are willing to work but cannot find a job. We have two types of unemployment in our country, in rural areas and in urban areas. In rural areas, there are seasonal and disguised unemployment. On the other hand, in the urban areas, there are educated unemployment. So causes of unemployment like low level of education, mental issues, physical health problem, stroke of fate, burnout, lack of motivation, or economical या financial crisis. So we should take some solutions to prevent the major problem of unemployment. Which solution we want to take? Like improvement in education system and stop poverty and health program for motivated labor and so many employment opportunities या employment organization that provide so much work to unemployed people. So if we use this solution, we can prevent the major problem of the unemployment. So this chapter is completed and now I am going to start geography second chapter, physical features of India. So bachcho, you have already learned earlier that India is a vast country with the varied land forms. What terrain do you live? If you live in plains that you are familiar to the stretches of the plain. तो बच्चों हम लोग जिस जगह रहते हैं, अगर हम लोग प्लेन्स में जाते हैं तो हम लोग प्लेन की जगह से familiar हो जाते हैं. If we live in hilly or mountainous area, the climate of these areas are very rugged and very hard to live. So, in fact, our country has practically all major physical features of the earth like plateaus, deserts, plateaus, desert, islands. So, you must be wondering how these physical features have been formed. So, now you will learn the physical features of the earth and how they have been formed. We find different types of rocks. Some rocks are hard like marble, which have been used for making Taj Mahal. तो कुछ चट्टानें कैसी होती हैं बच्चों, बहुत hard होती हैं, जैसे कि संगमरमर. And some rocks are soft like soapstone, which is used for making talcum powder. The color of soil varies from one place to another. तो मिट्टी का रंग भी हर जगह अलग-अलग होता है because formed by different rocks. So India is a large landmass formed during different geological period which has influenced her relief. Besides this geological period, some processes like weathering, erosion and deposition have created and modified the relief to its present form. Some scientists have attempted to explain the formation of physical features with the basis of some theories. Based on some theories, on such theory is the theory of plate tectonics. तो कुछ साइंटिस्ट ने कुछ थ्योरीज बताई हैं जिनके बेस पर फिजिकल फीचर्स का फॉर्मेशन होता है बच्चों. उसमें से एक थ्योरी है हमारी प्लेट थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक. According to this theory, the upper crust of the earth has been formed out of 7 major and some minor plates. The movement of plate के movement का result क्या होता है बच्चों? The movement of plates result in the building of stresses which when within the plates and rocks formed leading to faulting and volcanic mountains. तो बच्चों प्लेट्स के मूवमेंट का रिजल्ट होता है उसमें फोर्स होने लगता है, उसमें दबाव पड़ने लगता है. तो इस फोर्स की वजह से क्या रिजल्ट होता है बच्चों? फोल्डिंग और वोल्केनिक माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है. These plate movements are classified into 3 types. ये plate movement को हम 3 तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं बच्चों. सबसे पहले बात करते हैं कन्वर्जन बाउंड्री. अभिसारी गति जिसको कहा जाता है. तो ये हमारे देखिए 2 प्लेट्स हैं. Some plates come towards each other and form the convergent boundary. ये देखिए दोनों प्लेटें हैं जो एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं और ये क्या फॉर्म कर रही हैं? कन्वर्जन बाउंड्री को फॉर्म कर रही हैं. Now
These are three types of boundary: convergent boundary, divergent boundary, and transform boundary. Now measure physiographic units. So we can classify the physical features of India in 6 types. First, the Himalayan mountains. Second, the northern plains. Third, the peninsular plateaus. Fourth, the Indian desert. Fifth, the coastal plains. And sixth, the islands. सबसे पहले हम कुछ बात करने जा रहे हैं द हिमालयन माउंटेन्स। तो Himalayas geologically young and structurally formed mountains stretch over the northern borders of India। तो बच्चों हिमालय कैसा पर्वत है? जियोलॉजिकली कैसा है? यंग है और स्ट्रक्चरली कैसा है? फोर्ड माउंटेन्स है जो कहां तक फैला हुआ है? इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर्स में। These mountain ranges run in west-east direction from Indus to Brahmaputra. The Himalayas represent the loftiest barrier of the world। तो इसकी जो चौड़ाई है कैसी है बच्चों? वेरीज फ्रॉम 400 इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। द हिमालयस कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो हिमालय अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में उसके 3 समानांतर पर्वत श्रेणियां आती हैं इसमें, और नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दिस रेंजेस। The northernmost range is known as the Great or Inner Himalayas। तो बच्चों इसके northernmost जो रेंज है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेट, महान हिमालय या इनर हिमालय या हिमाद्री। तो उसको क्या कहा जाता है? जो इसकी northernmost रेंज है हिमालय की उसको हम लोग कहते हैं ग्रेट और इनर हिमालयस, और you can say हिमाद्री। It is the most consisting of the loftiest peaks with an average height of 6000 मीटर। तो ये कैसी हमारी लॉफ्टीएस्ट पीक है जिसकी एवरेज हाइट कितनी होती है बच्चों? 6000 मीटर होती है। It contains all the prominent Himalayan peaks. The range line to south of the Himadri forms the most rugged mountain system। जो रेंज है जो कहाँ पे है? लाइन टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री। हिमाद्री के साउथ में जो हमारी पर्वत श्रृंखला पड़ती है वो क्या फॉर्म करती है बच्चों? बहुत ही कठोर माउंटेन सिस्टम को फॉर्म करती है जिसको हम लोग कहते हैं हिमाचल और लेसर हिमालयस। Now that's all for today. I will continue this chapter in my next video. Good morning everyone. So welcome to the class. Today I am going to explain about protective tissues. As you all know that nowadays I am discussing about lesson 2 which is the tissues. So let's discuss about protective tissues. As you know the word protective means protection. So these tissues provide protection to the internal tissues of the plant. These are present in outer peripheral regions of roots, stem, leaves and flowers, and provide protection to underlying tissues. There are 2 types of protective tissues, epidermis and cork, and today we will discuss about it. So students, जो protective tissues होते हैं, नेम से हमें बात समझ आ रही है कि protective tissues है, that means ये प्लांट के टिश्यूज जो इंटरनली प्रेजेंट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इनकी प्रेजेंस क्योंकि प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी प्रोटेक्शन अंदर रह के नहीं हो सकती, इनको आउटर रीजन में रहना पड़ता है। तो ये आउटर पेरिफेरल रीजन जो होते हैं प्लांट के पार्ट्स के, फॉर एग्जांपल रूट्स के आउटर रीजन में, स्टेम के आउटर रीजन में, लीव्स के आउटर रीजन में एंड फ्लावर्स के आउटर रीजन में। इसके अलावा ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं जितने भी अंडरलाइंग टिश्यूज है इनको। 2 टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं, नंबर फर्स्ट इज एपिडर्मिस एंड नंबर सेकंड इज cork. So let's discuss about epidermis. Epidermis is the outermost layer of plant organs and it is single celled thick. It forms continuous layer of the aerial parts of the plant. It provides protection to internal tissues. In root, there is present a root hair which helps to absorb water. In stem, it is green and protected. In older stem, it becomes rupture because of thickness of the stem. And in dry climate, this epidermis is thick to prevent water loss. And in aerial parts of the plant, epidermis secretes shiny waxy layer
which is also water resistant and provide mechanical injury and also invasion by fungal parasites. So students, जो एपिडर्मिस होती है ये आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट की, और इसकी अगर थिकनेस की बात करें तो सिर्फ एक सिंगल सेल से फॉर्म होती है, दैट इज व्हाई इट इज ओनली सिंगल सेल थिक। इसका जो फॉर्मेशन होता है कॉन्टिन्यूअस होता है, कहीं पे भी बीच में कोई गैप्स नहीं होते, कोई होल्स या पोर्स नहीं होते, जितने भी एरियल पार्ट्स है प्लांट के उनमें ही कॉन्टिन्यूअसली प्रेजेंट होती है, जितने भी इंटरनल टिश्यूज उनको प्रोटेक्शन देती है एज आई टोल्ड यू। बट अगर हम रूट की बात करें तो रूट में एपिडर्मिस में रूट हेयर्स फॉर्म होते हैं, रूट में छोटे छोटे से हेयर्स का फॉर्मेशन होता है। ये फॉर्मेशन क्यों होता है? जब सॉइल से वाटर का एब्जॉर्प्शन रूट को करना होता है तो उसके लिए रूट हेयर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, तो इसलिए एपिडर्मिस ऑफ रूट में रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉइल। अगर हम स्टेम की बात करें, स्टेम की एपिडर्मिस कैसी होती है, तो स्टेम में एपिडर्मिस ग्रीन कलर की होती है एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है, दैट मींस स्टेम के सारे इंटरनल टिश्यूज को वो प्रोटेक्ट करती है। अगर हम ओल्डर स्टेम्स की बात करें, वो स्टेम्स की जो कुछ पुरानी हो चुकी है उनमें एपिडर्मिस रप्चर हो जाती है, दैट मींस टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? क्योंकि जब स्टेम ओल्ड होती है तो उसकी थिकनेस उसके साथ बढ़ती चली जाती है, एंड जब स्टेम थिक हो जाती है तो वहां पे एपिडर्मिस रप्चर हो जाती है उसकी थिकनेस की वजह से। अगर हम उन प्लांट्स की बात करें जो ड्राई क्लाइमेट में होते हैं, दैट मींस जहाँ पे वाटर बहुत कम होता है, फॉर एग्जांपल डेजर्ट्स, वहां पे क्या होता है, ये बहुत थिक होती है। क्यों? वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि ड्राई क्लाइमेट में ऑलरेडी वाटर बहुत ज्यादा कम है, और जो वाटर प्रेजेंट है अगर वो भी ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा तो प्लांट में वाटर की शॉर्टेज हो जाएगी। इस वजह से वहां पे ये एपिडर्मिस जो होती है ये थिक होती है, थोड़ी मोटी होती है, ताकि वहां से वाटर का लॉस जो है वो ना हो पाए। एंड लास्ट जितने एरियल पार्ट्स है प्लांट के, उसमें एपिडर्मिस एक स्पेशल वर्क करती है। वो क्या करती है? एक सिक्रीशन करती है। वो सिक्रीशन होता है शाइनी एंड वैक्सी, थोड़ा शाइन करता है, वैक्सी नेचर होता है, एंड बिकॉज ये वैक्सी होता है इस वजह से हेल्प करता है वाटर रेजिस्टेंस में, दैट मीन्स वाटर के लॉस को कंट्रोल करने में। एंड वाटर लॉस के साथ साथ जितनी प्लांट में मैकेनिकल इंजरी हो सकती है उसको भी प्रिवेंट करता है, एंड ऑल्सो जो फंगल पैरासाइट्स प्लांट पे इन्वेड करते हैं उनको भी रोकता है। फंगस कई बार प्लांट को डिस्ट्रॉय करती है, तो एपिडर्मिस उससे भी जो है एरियल पार्ट्स को प्लांट के प्रोटेक्ट करती है। लीव्स में एपिडर्मिस क्या करते हैं? लीव्स परफोरेटेड बाय स्मॉल apertures, for that perforation stomata is present which is guarded by two guard cells, and guard cells are surrounded by accessory cells, that means कि अभी मैंने आपको बताया था कि जितने एरियल पार्ट्स है प्लांट के उसमें एपिडर्मिस कैसे होती है, एकदम कंटिन्यूअस होती है। बट अगर हम लीव्स की बात करें, इन केस ऑफ लीव्स, यहाँ पे एपिडर्मिस कंटिन्यूअस नहीं होती है, यहाँ पे परफोरेटेड होती है। परफोरेटेड का मीनिंग कल मैंने आपको बताया कि जगह जगह पे स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो यही चीज लीव्स में होती है कि लीव्स में एपिडर्मिस में जगह जगह पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। These pores जो पोर्स प्रेजेंट है इनको बोला जाता है स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। एंड ये स्टोमेटा जो है गार्ड करते हैं टू गार्ड
हाईली कंप्रेसिबल होती है, दैट मीन्स इसको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें फायर भी इजीली कैच नहीं होती है। एक केमिकल प्रेजेंट होता है सेपरेट जो हेल्प करता है इसको इम्परमेबल बनाता है टू गैसेस एंड वाटर, दैट मीन्स चाहे गैस की बात हो चाहे वाटर की बात हो, किसी का भी एक्सचेंज प्लांट में इसकी हेल्प से नहीं हो सकता। ये सारी एक्टिविटीज जो न्यू स्टेप्स होती है उसमें होती है, या फिर लीव्स के बारे में मैंने बताया इसमें एक्टिविटीज होती है, बट इन केस ऑफ ओल्डर स्टेम्स कोई भी एक्सचेंज वहाँ पे नहीं होता। फंक्शंस की अगर बात करें, जितने भी अंडरलाइन टिश्यूज है उनको प्रोटेक्ट करती है, इंसुलेशन में हीट को गेन और लॉस को रोकने में उसमें हेल्प करती है, वाटर प्रूफ in नेचर होती है एंड ऑल्सो शॉक को एब्जॉर्ब करती है, दैट मीन्स प्लांट को कोई भी एक्सटर्नल चीजों से कोई फर्क ना पड़े इसमें भी